Well, that was a crucial moment in the match. Jongwi had just come on. He deceived him with a slower ball. The ball went straight up, and Masakadze dropped him at long off. I think he was on 27 or 23 or 24 balls at the time. And then he just went. Jongwi rolled his fingers over, took it away from the left-hander, got that leading edge exactly as planned. Masakadze put him down. But credit to Abishek, as you say, he was positive after a tough game yesterday. That's gone in the air, and it'll find the Gwilyn. Oh! Brian Bennett. He gets a hand on it, he's not able to hold on to it. And it'll be about 16 gone, 165 for 2. प्लीज़ भाई लोग, अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें। आप लोगों को T20 का सारा मुकाबला इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30,000 तक सब्सक्राइबर करवा दें। Zimbabwean fans yesterday. And not the faces we saw in Indian either. They'll be enjoying themselves. Why not? Beautiful Sunday afternoon out. 165 रन पे 2 विकेट। सुमन गिल और Farabani getting a bit of tap at the end of his last over. आउट हो गए। Now it's Luke Jongwi. Rinku surprised by the high full toss, looking for a no ball, but not getting it. Yeah, Tino, you mentioned what it takes for a side to come out the next day after a poor performance and bat so positively. I think guys like Abishek Sharma, it's just in his DNA. He's a modern batsman. He's grown up in an era where you learn to hit the ball hard and far. Another full toss definitely deceived Rinku. It was a slower ball and it dropped a little. Rinku, in old terms, that's a sluggable ball. But Abishek has grown up in this modern times where that is just in his DNA. That's how he bats. So I don't think it's extraordinary that he came out and played exactly in that fashion. Good running. Very good running. Abishek showed a beautiful swing of the bat. Left-handers look so good. He's one of those. Lovely full swing of the bat, no half measures. And one of the nice things about what he did was he hit balls on both sides of the ground. He's not a leg side slogger, not at all. That will run away. Looking for the wide Yorker. Luke Jongwi. He misses it by a couple of inches. Another boundary for India. Yeah, another full toss. This one lower and wider. That's easy for him to put away. He does, Luke Jongwi, at times struggle at the back end of the innings, trying to get his Yorkers and low full tosses in general. Yeah, it's a tough ask when you haven't quite got the pace to rush a batsman. He's got to rely on deception. And on a
good wicket like this, it hasn't held that much for the spinners or for the slower balls. It's a really tough ask on Luke to bowl at this stage of proceedings. I wonder if in the coming games, if Richard Ngarava gets fit, that he might slip in there with his left arm quick bowl. Mind you, when he gets it right, he's very good, Jongwe. Finds Kandaraza will try and keep him for the latter part of the innings because of those variations that he does possess. Sometimes you just feel that 3 overs, and if they've gone well, is about right for him in a T20 game. Often if you try and push that 4th over, especially in the last 5, it can go for a few. 48 to 37 for Gaikwad. Slammed away. Acres of space between Lamont and deep mid wicket. Then he finds it, brings up a 50 as well, Gaikwad. Outstanding in a 17 gone, 177 for 2. अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों को T20 का सारा मुकाबला इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को सारे मुकाबले इसी चैनल पर लाइव देखने को मिलेगा। आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकते हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Innings 177 for 2. 300, 200, I beg your pardon. Looks like it'll be surpassed quite easily. Chatara come back into the attack for his final over. These 3 have gone for just 18. Chatara's been excellent, and so has Gaikwad. He's just accelerated a bit towards the end of this innings. He was definitely quite cautious to start with, and then he's picked up. He was a nice foil in the partnership with Abishek. Now, as we get towards the end of this innings, he's got to take charge. Now he's hitting to the shorter side on the leg side, and I'm sure he's going to try and access it. Straight down the ground, 68 metres to that straight boundary. Hit it clean as a whistle, back over the bowler's head. Yeah, really nicely struck. Hasn't looked to force, just gone straight. The momentum off the bat not there because it's hit so high, but the timing good. Oh, that's even better. Sikandaraza's back. All he can do is watch it sail over his head for 6. Indian batsmen have all the freedom in the world now. It's a tough ask to keep these Indian batsmen in check. And yet they're going to race past 200. That's in the slot. You do not want to be bowling there. And people like Gaikwad. This time he's gone slow ball, wide outside the off stump, top edge 4. Raining boundaries here for India. Chatara looking for variations, and this one not working. He's gone wide. Straight he got hit back over his head. He's gone for a wider, slower ball. When you're throwing the bat that hard at it, even if you don't hit it in the middle, it races away. Two important balls left in this over.
going for the wider offside ball, trying to force Gaikwad to hit it into the wind and to the longer boundary. And he's timed that beautifully along the ground. Regardless of the length of the boundary, comfortable four. Just open the face and time it away. Outfield's quick. Winter time and Zimbabwe. Partnership. Just 26 balls. India are looking strong. 197 for 2. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को T20 का सारा मुकाबला इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, वो भी फ्री है। तो केवल आप लोगों को सब्सक्राइब ही तो करना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। Zarabani, 12 off Jordan. So wickets in hand has allowed India just to up the ante against the Zimbabwean seamers in particular, who were quite good early on, Andy. They were, and Zarabani was one of them. He's been excellent. He's going to have to be excellent again. There's the bounce. He's used that bounce beautifully today. He might at the death think he's going to bowl Yorkers and slower balls. But Gaikwad's been good. He was all control at the start of his innings. Hit the ball on the ground, found the gaps, picked slower balls, and then he's accelerated towards the end. He's got that strike rate up to where it should be. Down to third man, chipped out of the fielder. Fielder, 1. Today, it's played all around the ground and dealt mainly in force, which is not surprising given he's not one of the strongest batters you'll see in modern day cricket, but he's been effective and he's been a great partner and foil for Abishek Sharma, batted at over 200 strike rate earlier. Sarabani now trying to limit the damage, doing a great job so far. Andy, you've talked to us about what the Indian players would have thought and how they would have approached today after yesterday to do as well as they have. I'll put you in the Zimbabwean change room as a coach, halfway stage. What are you saying to your batters in preparation to go out and have to chase plus 200, having struggled just 115 yesterday? Sarabani bowling, trying to force Rinku to hit it to the long side, bowling at that wide line, doing a good job. Yeah, it's a completely different situation, isn't it? Obviously they chasing today, but I think in a way it'll free the Zimbabwean batsman up, which isn't a bad thing. There's no place for caution up front, and that power play is going to be really, really important. One thing they've got going for them is there's one less specialist bowling option available in the Indian ranks. Rinku Singh is not a big man, but wow, he has hit this beautifully. Cross seam at the wide line.
Zarabani's been predictable on that front. That is in the screws. That landed in the jacarandas. With a Sandy, in 2023 he had 5 consecutive sixes. Over. Leading 29 for KKR versus Gujarat. I do remember it well. And one of the reasons I remember it well was Yash Dayal, who is now at RCB, was the left-arm seamer who bowled at him. And it was such a tough examination for Yash. I think everyone in the country felt for him as he was getting pummeled in this last over to lose the game. Yash has come back brilliantly from that experience and he had an amazing IPL this last season. Top edge, it'll go over short third man, Luke Jongwe. You will stop it from going into the boundary and then you'll get 2. Wellington Masakadza assists with the cleaning up. Zarabani's sticking to length. This time, not looking for the wide line and getting the top edge. Unlucky not to get the wicket. One ball of his 4 overs left. He has smashed that. The sound of leather off willow. 19 gone. 2-1-3 for 2. प्लीज़ भाई लोग अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप लोग मेरे चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर करा देंगे तो आप लोगों को दूसरे इनिंग भी देखने का मौका मिलेगा। प्लीज़ भाई लोग अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को दूसरा इनिंग भी देखने का इस चैनल पर मौका मिलेगा और आप लोगों को सारे T20 मुकाबले इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Better. Ends up with 130 to score in the context of the game. Very good. Jongwe chosen to bowl the last over. Intimidating last over. He's bowling to Gaikwad. And the Indians are on the rampage. He's bowling to Gaikwad. Gaikwad's hitting to the shorter end, shorter side, and with the wind. They've set a dominant offside field. Yeah, that's good awareness. It's very good awareness. He's just got himself outside the line of the off stump because he knows he wants to get it behind square. The full toss makes it easier. That did look easy, didn't it? He shuffled a little. He knew where the ball was going to be. In fact, he shuffled a lot. He got the ball exactly where he wanted it. And from there, it was simple for a man of his class. Now, is that an opportunity? Oh, Brian Bennett. Has he pulled the pin at the last moment? Does captain think so? His captain thinks so, because I think he has. Yeah. He could have had a crack at that. I think if we look at that honestly. It's quite tricky though, at the end of an innings like this, you try to judge whether the wicket or not risking the boundary
You're making those calculations in your head as that ball's coming towards you. That's what Brian Bennett would have been doing here. If I have a crack at this and I dive forward and miss it and it goes for the boundary, is that worse? Was that an edge? I think it might have been an edge, but it goes for four nonetheless. Austin Tiz confirms match on ball. So India racing away now. Another full toss. An edge. You can't blame the keeper. Jungwirth, important few balls to come. This is his highest score T20 against Zimbabwe. Previous was 180, so they've gone well ahead of that. It's amazing contrast to yesterday, isn't it? What an amazing game we have the pleasure to be part of. Tight, low scoring, tricky, and we're playing on the same pitch. Smashed. Feel the back. Won't get there. 6 more. Indian supporters loving it. Zimbabwe skipper not. That's the 78-metre boundary. And Rinku, thinking about the length of the boundary, he's just thinking of strong finish to the innings. It's the long boundary, it's into the wind. Last ball. It goes down the ground, and it goes for 6 to finish the innings. Expensive over from Luke Jungwirth, 21. Rinku ends up 48 to just 22, and India 234. आप लोग यदि दूसरा इनिंग देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को 10 मिनट बाद फिर से इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जा सके। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी चैनल पे सारे मुकाबले T20 के देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी लोग दूसरा इनिंग भी इस चैनल पर देख सकते हैं। अब से 10 मिनट बाद दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल पे आप सभी लोगों को T20 के लाइव मुकाबले देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को केवल सब्सक्राइब ही करना है। प्लीज़ भाई लोग, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। 10 मिनट बाद फिर से आपको इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें। दोस्तों, आप में से जिस किसी को भी इस मैच की 100% विनर और सेशन रिपोर्ट चाहिए वो लोग अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक मैंने लाइव चैट में जो है आप सभी को दे रखा है। भाई फटाफट ज्वाइन कर लेना क्योंकि सभी मुकाबलों की रिपोर्ट आपको एकदम फ्री में जो है दी जाती है जो कि 100% एक्यूरेट रहती है। तो अभी जुड़े टेलीग्राम ग्रुप के साथ, लिंक आप सभी को चैट बॉक्स में दे दिया है।
दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज दोस्तों आप में से जिस किसी को भी इस मैच हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन हमारे टेलीग्राम है उसे दबाइए और बेल आइकन को मैंने लाइव जरूर दबा लेना ताकि जो है आप मैच आप देर मिस ना करें ज्वाइन कर लेना क्योंकि सभी दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी जुड़े टेलीग्राम चैनल को सब लिंक आप कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और में लाइक किसी को भी इस मैच दबा लेना ताकि विनर और मैच आप मिस ना करें लोग अभी हमारे टेलीग्राम दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल मैंने लाइव वाले सभी मुकाबले जो है आप कवरेज को देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें It's a tough day for the bowlers, all of them. Zarabani was outstanding in his first couple, but they had a hard time. Look at those economy rates. Chatara, after a man of the match performance yesterday, went at near tens. Raza, similarly. So a tough day for all the Zimbabwe bowlers and the Zimbabwe captain. Right, so as we go for our mid-match break, Zimbabwe will need a mammoth 235 of the allotted 20 overs. It's going to have to be at 11.75 to the over. Tough work for them in the second part of this game. आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए? आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके एनुअल इनकम का 10 गुना होना चाहिए। बजाज एलियांज लाइफ के 10x टर्म प्लान। जब लाइफ इंश्योरेंस कवर हो एनुअल इनकम का 10 गुना तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि एक भी मैच आप मिस ना करें दोस्तों अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले सभी मुकाबलों का लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे और 3 मुकाबले हारी है गाइस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।
इसलिए अभी शायद नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, इसलिए 2 मिनट लेट लगेगा। आप लोग वेट करिएगा, फिर 2 मिनट में लेके आ रहे हैं फिर से दूसरा इनिंग का लाइव स्ट्रीम। जिम्बाब्वे टूर इंडिया, इंडिया टूर जिम्बाब्वे। हो जा स्टार्ट, हो जा स्टार्ट, 1 2 3 सिकलका बूम बूम। गाइस किसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया, ऐसे लिखिए, ऐसे लिख के कमेंट करिए आप लोग। आज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कमेंट करिए। हो रहा है गाइस, कुछ तकनीकी इशू के कारण प्रॉब्लम बता रहा है। जिलानी खान, आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अहमद अली, आपका भी शुक्रिया। आप सभी तमाम लोग भी एक साथ मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अब आ चुकी है जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी के लिए। जिम्बाब्वे को 120 गेंदों में बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, 120 गेंदों में बनाने हैं 255 रन जीतने के लिए। पहली गेंद मुकेश कुमार के ओवर की, सामना करेंगे बल्लेबाज काया। काया ने स्वागत किया है मुकेश कुमार का चौके के साथ में। ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद थी और काफी जबरदस्त शॉट, हालांकि ज्यादा जोर से मारने का प्रयास तो नहीं किया। होने वाली है, इनके सामने रहेंगे आया, हालांकि एक अच्छी गेंद